said Dragon and are numbered 1 to 4 from right to left when looking. हाँ भाई दोस्तों, तो ये हमें एस्ट्रोनॉट्स दिख रहे हैं। राइट, ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। एम आई ऑडिबल? पहले तो जल्दी से चेक कर लेते हैं, आवाज आ रही है? To return to Earth. Now that way, in the unlikely event that we see an off-nominal scenario, the crew and vehicle are prepared to deorbit and return home safely. Frank, we saw that the D2DM application has stopped working. You can close that out and reopen the application. Copy, Mark. That call was to Frank Rubio on the International Space Station side. His job today from the space station is to monitor the undocking and port relocation maneuver from inside the International Space Station, part of the checks and balances that are built in to these delicate operations. But as Jesse mentioned, we have the 4 crew members inside Dragon Endeavour ready for undock. She mentioned that all teams have polled go. So we're counting down to the initiation of what's called the undock command. That's happening in about 1 minute, 6:05 a.m. Central Time, 4:05 a.m. Pacific. At that time, the undock sequence will be initiated, and it's about a 5-minute sequence. Right now, with Dragon attached to the zenith or space-facing side, it's attached by 12 latches, as well as an umbilical that connects and provides data and power to in between the Dragon and the International Space Station. Upon undocking, it will separate from the International Space Station and retreat out to about 60 meters. We should expect either a hold or a smooth transition over to this transition maneuver trajectory that you see. It makes its way over to a midpoint, right about the halfway mark in between the 2 docking axes, before making its way to the new docking axis, also at about 60 meters. From there, it approaches inwards to about 20 meters for a hold. This is the same waypoint 2 that we see for Dragon rendezvous and approaches and dockings to the International Space Station. After all teams poll go from waypoint 2, it'll make its way in. And again, this is a 45-minute maneuver. Dragon, SpaceX on the big loop. We will be standing down from the 11:05 undock sequence time. We'll come back with more words. है ना? तो इसको पॉज कर देते हैं। तो होगा ये कि यहाँ से हमें इसको हटाना है ना? तो यहाँ से हमें इसको हटाना है। हम इसको यहाँ से हटाएंगे और मैन्यूवर करके, यानी वो उड़ेगा, बाहर निकाला जाएगा उसको। And Dragon Station Houston on the big loop. We're just trying to get some monitoring tools up for Frank, and we don't have a rush for today's activity, so we're going to catch this on the other side of our handover. जो ड्रैगन कैप्सूल है, तो ड्रैगन कैप्सूल यहाँ से, तो ये है from zenith to forward port, यानी So that read up to the crew, Frank Rubio, again inside the International Space Station, has a display tool called the RPOP, Rendezvous Proximity on Operations Panel, and a series of software that allow him to monitor Dragon's undocking and port relocation maneuver, getting telemetry, and also the ability, as a safety measure, to send commands to the Dragon, should commands not be enabled from inside the Dragon cabin. As a safety precaution, you heard the teams wave off from the initial, what they call 11:05 undocking time. That's referring to 6:05 a.m. Central Time. And what that means is that's the initiation of the undock command. Again, it's a 5-minute sequence until we actually see the physical separation 5 minutes later. For a port relocation maneuver, there is a generous window built into the operations. So again, they just identified that there is no rush to get separated from the International Space Station. That window that they were talking about is the data and communications coming from TDRS satellites. Station on 2. I have good feed on Dragon docking monitor. Copy.
देखो docking system is not ready yet. So right now वो इसके अंदर बैठ चुके हैं, ये पीछे जाएगा और फिर घूम के दूसरी साइड आ जाएगा. So you hear those words up to the crew, over to confirming from Frank Rubio again, a NASA astronaut on the International Space Station side of this operation, confirming that he's got his displays. What they're going to do is they're going to wait onto the other end of what's called a handover. This is the TDRS satellites that provide video and audio communication from the space station down here to the ground so teams can monitor. That handover is expected in about 7.5 minutes. And what the teams are going to do is wait until that time when we regain communications and initiate a new undock sequence command at 6:18 a.m. Central Time. Again, that's the 5-minute period that allows umbilicals to disconnect, as well as the 12 latches that are currently securing Dragon Endeavour to the International Space Station. That 5-minute sequence puts our new target around 6:23 a.m. अभी ये कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन होना है, वो कम्युनिकेशन मतलब इसके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, तो ये ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है. तो अभी एक हैंडओवर होगा फिर से, यानी अभी कोई एक और यहाँ पे कोई सैटेलाइट ट्रांजिट करेगी, तो जो सैटेलाइट ट्रांजिट करेगी तो उसके थ्रू कम्युनिकेशन बैठेगा, जो कि तकरीबन 7-7.5 मिनट बाद एक चांस आएगा, अपने पास एक विंडो ओपन होगी जहां पर कम्युनिकेशन सेटअप होगा. और फिर उस कम्युनिकेशन सेटअप जैसे ही वो होगा, देन दे अगेन विल ट्राई टू इनिशिएट द अनडॉकिंग प्रोसेस. The crew, again, we're targeting 6:18 for that undock sequence command. That puts our undock and physical separation targeted for 6:23 a.m. Central Time. In the meantime, because we're waiting for this handover period, they are able to pull their visors up. Again, as a safety measure built into the operations. Visors are down during some of the most significant moments of this maneuver, including the physical separation from the space station for Dragon Endeavour. With the visors closed, the suits themselves can provide an extra layer of protection in terms of pressure. But since we're just waiting here idly for that handover period, expected in just a little more than 5 minutes, where we'll lose video that we're seeing here from space, we expect to regain that in just a short order, probably around 20 seconds to 30 seconds. And again, we're targeting that undock sequence to initiate at about 6:18, so a little bit of margin built into the handover operations. Dragon crew, this is station. I have a little easy listening for you while we wait. So we are just waiting. टाइम है 7-7.5 मिनट का टाइम है, हम उसके लिए बस वेट कर रहे हैं. वी आर वेटिंग फॉर दैट टू पास, क्योंकि जैसे कनेक्शन आएगा तो दिस मैन्यूवर विल बी टेकन अप. Frank, I hope you enjoy a short time without us. We should be back in a couple hours, we hope. Sounds great. Some great music from the crew as they are
awaiting undocking and relocation of the Dragon Endeavour to a new port. So right now they are communicating, no? अब जैसे ही बैठे हैं अंदर, तो ये चाहें तो ये अपने सूट से रिलैक्स हो सकते हैं, अपना वाइजर वगैरह हटा सकते हैं क्योंकि अंदर का एटमॉस्फेयर भी थोड़ा प्रेशराइज्ड है, बट देन सेफ्टी के लिए इनको बोला जाता है कि बैठे हो या किसी देर बैठे हो, क्योंकि जो इनका स्पेस सूट है वो भी सारा प्रेशर वगैरह इनको प्रोवाइड करवा रहा है जो इनको चाहिए ना. We're about 6 minutes away, 5 minutes away from the undocking command. And so the crew, what you're seeing on your screen is the crew preparing for relocation. We've got a live view inside of Dragon Endeavour. And you can see both the pilot and commander in your view. तो अभी 5 मिनट और वेट करना अपने को. We are just 5 minutes away from that unlocking command. तो यहाँ से अनलॉक होगा. Okay, here we go. This is International Space Station. As you see, we're starting to enter into that handover period that was mentioned, which was part of the reason for the new undocking time being So I think announced at, again, 6:23 is when we're targeting for physical separation, so we'll use video and audio communications from the International Space Station. Lots of teams working in synchronization for this delicate procedure today. What you're looking at is a live view of the International Space Station Flight Control Room here in Houston, Texas. The teams here are monitoring the International Space Station as a vehicle and seeing through the operations for both the vehicle systems as well as the crew. Leading the teams here in Mission Control Houston is Flight Director Pooja Jasrani. She's working with her counterpart, the Mission Director over in SpaceX in Hawthorne, Alex Kanalakos, the Mission Director overseeing the operations from the Hawthorne side. All teams are talking. So I think ये Tesla होगा अपना SpaceX है, हाँ? And a correction, Alex Kanalakos is the Capcom that you see there in Mission Control Houston. Next to Pooja Jasrani is his voice that you're hearing on what's called the Big Loop. The Big Loop is a joint loop where the teams here in Mission Control Houston as well as the teams over in Hawthorne, So they talk with right now वो both जो the हमें दिख crew रही थी on जो inside Dragon control Endeavour as देख well रही हैं as वो है inside the पूजा International जसरानी. Space Station. All teams communicating on a single loop and staying ये completely SpaceX का inside. मिशन कंट्रोल कैलिफोर्निया में. As we wait for the handover period to come back with audio and video from the International Space Station, a little more on why we are doing a port relocation. Dragon SpaceX on the Dragon visors are down. Copy that. Visors are closed and ground is go for undock at 1118 Zulu. 1118 Zulu. Dragon visors. Again, 6:18 a.m. Central Time, the target for the undock command being sent. It's a 5-minute sequence to get us to physical separation 5 minutes later. That's happening. Station Houston on the Big Loop performed steps 2 through end in 10602 Dragon for relocation monitoring. International Space Station. And station crew is ready for Dragon undocking. कुछ भी बोला यार. अगर कंपेयर करें तो ये तो बड़ा एकदम हाई टेक हाई फाई लग रहा है ना जो SpaceX का मिशन कंट्रोल है.
If you compare these two, And you देखो heard ये that तो go क्या from बोलता all है, oh my teams from goodness Mission ना, Control Houston, from the ये teams कम in से कम Washington, 20 as well 50 as the है, crews ये in अपना Sandy, स्टैंडर्ड टाइम Endeavour, लग and रहा है। International Space Station. All teams are go, counting down. यहाँ पे थोड़ा बिखरा Less बिखरा than दिख रहा 30 है, बिखरा seconds बिखरा from कम the दिख रहा है। undock command being initiated. KU, or ऐसा नहीं video है from वहाँ the पे मल्टीपल International Space स्क्रीन नहीं Station, है, not required लैपटॉप की for that मल्टीपल स्क्रीन है। initiation to ये तो मल्टीपल स्क्रीन जहाँ पे तुमको दिख रहा है, 3 मॉनिटर है सबके सामने, इन पे भी and है, that सब पे है, triggers तो ये थोड़ा Dragon बिखरा to बिखरा दिख रहा है। automatically start its undocking sequence. Again, that is retracting the umbilical that connects the Dragon Endeavour to the International Space Station, providing data and power. Undock sequence commanded. Very good. Right on time, 6:18 a.m. Central Time. The undock sequence has commanded. It's a 5-minute sequence again until physical separation at 6:23. What's happening now is the umbilical is retracting. That umbilical originally providing data and power in between the station over to the Dragon. तो आज जो हम हटा रहे हैं ना, उसका नाम है ड्रैगन एंडेवर, और वो वहां से इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि अब नई सप्लाई आने वाली है, जून में प्लान्ड है. That first step is complete. With the umbilical completely retracted, the first 6 latches are starting to retract. As Gary mentioned, the hooks will begin to retract. That will allow the Dragon spacecraft to then fire its Draco Okay, तो thrusters पहला स्टेप in कंप्लीट 2 हो गया short है. bursts to break तो the जो stick between it and the अम्बिलिकल docking port, कनेक्टेड होती है, and then जिससे डेटा और physically बाकी separate चीजें from मिलती the हैं station. हमें, जो And ड्रैगन that से will happen इंटरनेशनल at स्पेस स्टेशन पे the कम्युनिकेशन होता है, फिर वो 6:23 जो हमें मिलता a.m. है, तो Central वो Time रिट्रैक्ट हो गई है. mark. अब जो पूरा सीक्वेंस है वो Then इनिशिएट Dragon होगा, will slowly 5 back मिनट के away from आसपास का पूरा station प्रोसेस है. लेट्स and सी. activate its LiDAR, which stands for Light Detection and Ranging, and that'll begin tracking the space station. Once it acquires a solid signal, the ground will command Dragon to hold approximately 60 meters away from station. And once everything looks good, Dragon will begin to move from in front of the station to above it. So again, we are waiting for the hooks to complete unlatching, and then we can begin the physical separation from the station. And again, as we count So, down, अभी फिजिकल सेपरेशन चालू video नहीं is हुआ है. not अभी क्या बता रहे हैं, required पहले for अम्बिलिकल the है, मतलब जो वायर्स undocking वगैरह to कनेक्टेड occur. होते हैं ना, जो That डेटा वगैरह handover लेने के लिए period that we were कनेक्टेड होते talking हैं, वो about was हटा लिए. audio. So अब you're हुक्स hearing the हटा रहे big हैं, यानी loop and the अब यहाँ communications पे नेक्स्ट स्टेप from the होगा crew कि on board पूरा the का पूरा International ड्रैगन जो Space Station, कैप्सूल है as वो अब well as अलग हो Dragon जाएगा Endeavour. हुक्स Teams हटने are के बाद. monitoring all लेकिन along the ऐसा way, नहीं है कि बस वो receiving हटेगा और telemetry and दूसरी data जगह from लग जाएगा. Dragon. नहीं, वो वहां से First हटेगा, set of रडार्स hooks होंगे, जो open and लाइट nominal. डिटेक्शन रडार्स हैं वो चालू होंगे, और वो जाकर फिर है ना पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्कैन करेंगे अपनी 6 hooks लोकेशन के down लिए. and वंस 6 दे to विल go. डू दैट, उसके बाद हमें यहाँ से नीचे से पता चलेगा कि हाँ भाई, नाउ वी आर गुड टू डॉक. तो एक जगह से अनडॉक हुए और फिर दूसरी जाके डॉक हो जाएंगे. Again, teams in Houston on your screen on the left, as well as in Hawthorne, California on your screen on the right, monitoring these operations. We're on track for an on-time physical separation.
counting down about 20 seconds or more from So physical we are just waiting, separation, standing है ना? by. हमें बस अभी इंतजार है, हमारे पास सिग्नल नहीं है, तो टीम्स आर जस्ट वेटिंग कि वो जो पूरा सीक्वेंस है कंप्लीट हो जाए, और वी डोंट हैव राइट नाउ सिग्नल, हमारे पास कोई इसका ऑडियो विजुअल जो है सिग्नल नहीं है हमारे पास, तभी स्क्रीन पे हमें मिशन कंट्रोल सेंटर्स दिखाए जा रहे हैं। देखो डिफरेंस है ना, ये जो मिशन कंट्रोल है यहाँ पर क्या चल रहा है, बाहर से वो बंदा आके देख सकता है कि क्या करा जा रहा है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है, ये प्राइवेट है ना कंपनी। Great All right, news. we have confirmed physical separation. Good undock burns 1 and 2. The retreat rate is nominal. That undock time was 6:23 a.m. Central Time. At the time of undocking, space station and Dragon Endeavour were 258 statute miles north off the coast of Australia. ये आया है, तो अब फिजिकल सेपरेशन होगा। फिजिकल सेपरेशन कंफर्म भाई, हो चुका है फिजिकल सेपरेशन। यहाँ पे अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है। एक बार एक बच्चा पूछ रहा था कि ये जिगजैग लाइंस क्यों है, ये जिगजैग लाइन नहीं है भाई, जो अर्थ है वो गोल है और वो भी घूम रही है और हम भी चल रहे हैं, तो उसको जब प्रोजेक्ट किया जाता है ना उसकी लोकेशन को कि कैसा दिखेगा, ऑन विच पार्ट ऑफ द अर्थ वी आर राइट नाउ, तो उस प्रोजेक्शन को जब बनाते तो ऐसा बनता है। Endeavour and the International Space Station up through the docking axis to the 60-meter point, the point that the crew will then initiate a transition to the new axis. Again, no video from the International Space Station. We are getting data and telemetry showing the Dragon and its nominal backing away from that port. तो जब तक कि ड्रैगन कैप्सूल जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 60 मीटर तकरीबन पीछे नहीं आ जाएगा, तब तक जो क्रू है वो इनिशिएट नहीं करेगा नेक्स्ट स्टेप को। तो अब वो अनडॉक हो गया है और अब वो उससे अलग होगा। सो हमें वीडियो नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ टेलीमेट्री मिल रही है। Dragon SpaceX ground has confirmed good run out performance and will be commanding hold. So Dragon is right now backing away, मतलब जहां पे कनेक्टर था वहां से पीछे हो रहा है। Getting great. Houston Station on 2, ISS thrusters are enabled. आ गया है, सो आ गया ना। Copy. ओके, तो यहाँ पे आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, दे आर स्कैनिंग। Dragon is in command hold 1. Dragon toppers. As Dragon Endeavour passes over a ground station, still waiting for a communication from the station, but we are able to get video from Dragon itself. This is the center line camera looking right down at its original docking port, that zenith port that you see at the front end of the station at the Harmony module. It backed away and commanded a hold approximately 80 meters. Teams are now assessing to make sure everything is ready for that transition maneuver that gets it to the new docking axis. That hold is settling अभी ऊपर है, just ऊपर आ गए under हैं 9 meters. और वो भी यहाँ पे डॉक था। Confirmed good run out performance. You are go to command, go to relocate. Hi, command and go to relocate. Dragon executed. यानी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी ड्रैगन और ये दोनों बस एक साथ चल रहे हैं, वो इसके नीचे ही चल रहा है।
Okay, so good to go. So we just completed a hold for redocking systems and alignment evaluation, and then got a go for the maneuver to begin Dragon moving towards its new docking port. Now this process will take about 15 minutes, and this will move the Dragon vehicle towards the forward port of Harmony and IDA-2, or the International Docking Adapter 2. You can see on your screen the transition maneuver is what will happen next. That move from the current docking port to its new parking. तो अभी क्या हुआ है, अभी वो यहाँ से ऊपर उठ गए हैं, वो यहाँ पे हैं अभी, अब वो आगे जाके लगेंगे, उसके ऊपर उठ गए थे, तभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नीचे दिख रहा था ना, क्योंकि वो ऊपर उठ गए थे. That retreat got us to just under 90 meters. So to get to that transition point, the crew is actually making a slow maneuver still along the undocking axis to get back down to the original 60-meter hold point. So they're actually, it kind of looks like they're redocking a bit, but all they're doing is just getting to that transition. I think यहाँ dock हो रखे होंगे probably. SpaceX, you have a go to raise अब यहाँ पे visors per docking crew होगी. preference. Just SpaceX snag advisors coming up. Again, the most critical moments of the port relocation maneuver are the undocking and redocking. The actual contact with the International Docking Adapters on the International Space Station. During those times, visors are down, the crew has that extra layer of protection, but during the transition maneuver, they do have the ability to open up their visors. तो अभी वो शायद 90 मीटर ऊपर है, 60 मीटर आएंगे, and you'll see them तो अभी close क्या लग रहा है those देखने में visors कि once शायद वापस जाके वहीं डॉकिंग करने once वाले हैं. we नहीं, वो get उस the पॉइंट पे आके फिर then they will do the initiation transition to go maneuver, inside जिससे कि वो आगे waypoint 2 जाके दूसरे and वाले पोर्ट पे डॉक कर redock on the सके. new axis on the forward port. Again, what the crew is doing is coming back in to 60 meters. They had a commanded hold at just under 89 meters, so they're making a slow and methodical movement inside, still along that same undocking axis, but they just want to meet the 60-meter point. We're now inside 71 meters. ये देखो, आगे आ रहा है ना, दिख रहा है ना, ये ऊपर था, नीचे आ रहा है. You're seeing live on your. Go ahead, Gary. Oh yeah, I was just listening to the flight controllers here in Mission Control Houston. They're tracking this maneuver तो अभी 70 मीटर की हाइट पे है, to get 60 to that मीटर पे जाना 60-meter है, hold point. 89 पे पहुंच गए थे, उसी पे, मतलब यहाँ से ऊपर उठे थे, So it looks like that maneuver 89 is पे आ गए as थे, अभी expected to 70 पे हैं, 60 60 पे meters. पहुंचेंगे, then they will do the maneuver and they will go and attach themselves to the other port. क्योंकि यहाँ पर आकर जून में एक दूसरा ड्रैगन आके यहाँ पे लगेगा, सप्लाई लेके आएगा ड्रैगन, खूब सारी धरती से. What you're seeing on your screen is a live view inside of Dragon Endeavour, and you can see on your left-hand side, in seat 2 is Commander Steve Bowen, and in the seat on the right-hand side is Woody Hoberg, who is in the pilot seat. Dragon has reached the 60-meter hold point, and you are go to command relocate transfer to begin axis transition. Reminder that soft capture ring deploy will begin in the relocate to axis stage. Things in space, they can't go hasty. वो जल्दी नहीं हो सकती, आराम से करनी होती है.
क्योंकि वहां पर आप जल्दी से ब्रेक लगा के रुक नहीं सकते ना, गड़बड़ हो गई तो, Station Houston on the और big छोटी सी loop. गड़बड़ Monitor कैटास्ट्रॉफी में for कन्वर्ट हो step सकती है, 6 and 1.602 तो आप चांस नहीं Dragon ले port सकते, relocation monitoring. एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। जो 60 मीटर होल्ड पॉइंट पे ड्रैगन पहुंच गया है, नाउ एक्सिस ट्रांजिशन होगा, इस एक्सिस से इस एक्सिस पे आएंगे। And with that, the command, the crew, again, as a recap, the crew did reach that 60-meter hold point coming in from 89 meters. And with good data being received from here in Mission Control Houston, teams gave a go to initiate that transition maneuver. So it is slow and methodical. It's a two-step process to transition to the new axis by way of a midpoint. So from the original docking axis you to can the see midpoint is approximately an 11-minute maneuver. It sort of looks like the tip of a triangle, the maneuver to get from one docking axis to the other. So it goes straight out to the midpoint, about the halfway point between the two axes, and then from the midpoint of the transition initiates another maneuver to get down to the new docking axis. The transition is from 60 meters on the undocking axis to 60 meters on the new docking axis. तो यहां से वो पहले इधर आएंगे, पहला मनूवर, दूसरा मनूवर वो यहां पे आके टर्न होंगे एंड देन दे विल डॉक। तो अभी वो यहां से अनडॉक हुए हैं और उनको यहां जाना है, तो पहले लेट्स सी। तो इस पोर्ट का नाम है जेनिथ, इसका नाम है फॉरवर्ड पोर्ट। ओके, सो इट्स हैपनिंग नाउ, दे आर डूइंग दैट। देखो ये LIDAR, ये एक तरीके से ये रडार ही है, बट इट इज अ बिट मोर इम्प्रोवाइज्ड वन। तो ये स्कैन कर रहे हैं पूरा उसको, क्योंकि इसके थ्रू दे आर गोइंग टू स्कैन इट, और प्रोबेबली ये स्कैन करके जैसे ही वो टारगेट कैप्चर होगा, लोकेशन गो अहेड हो जाएगा। From the International Space Station's Tracking and Data Relay Satellite network, the Near Space Network. We're getting that video from Dragon as we move our way outside of the ground stations that were providing video feeds directly from Dragon. Everything's looking good on this port relocation maneuver so far. Again, it's about 11 minutes to get to the midpoint. Just a quick recap as to why we are doing the port relocation maneuver. Just a high level, what we're doing today is to move from the zenith port of the Harmony module over to the forward-facing port. So you see Crew 6 Dragon on its original docking port International is Space being moved Station, to that forward side that you see on this new graphic. Dragon है, यहाँ पे progress The main 83 है। reason is for तो the यानी अभी इतने arrival लोग यहाँ पे आए हुए हैं, of the इनको लाया हुआ है, ये cargo सब लेके तो आए होंगे। spacecraft CRS-28 mission, carrying a precious cargo inside the unpressurized trunk section of the cargo Dragon vehicle are new IROSAs, or Rollout International Space Station Rollout Solar Arrays. This is part of a series of power upgrades to the International Space Station that are being planned. There's been several spacewalks to install. You can see, देखो यहाँ पे scan करके they are trying to get in the position. IROSAs, which are currently installed and providing power to the International Space Station. There's planned to be an additional 2 coming up on CRS-28. Docking to the Zenith port allows the robotic arm. In this graphic, you see sort of to the right of the 1A power channel, that Canadarm 2
तो जो position ब्लू में itself है and move यहाँ itself पर along रोल the आउट station's सोलर एरे, truss जो नए वाले and सोलर reach एरे हैं वो out लग चुके to हैं। grab the जो IROSs from the ग्रीन है unpressurized अभी, trunk. यू रिमेंबर अभी कुछ दिन पहले स्पेस वॉक करा था एस्ट्रोनॉट्स ने, Reach of the दे वर Canadarm2 प्रिपेयरिंग is दीज टू just so सेगमेंट्स that फॉर they द can reach अपकमिंग the कार्गो, जहाँ पे zenith नए port. सोलर एरे Can't आएंगे, अब quite वो यहाँ reach the लगेंगे। forward port. इनका माउंटिंग हार्डवेयर का So this इंस्टॉलेशन relocation कंप्लीट हो गया maneuver है, allows रोल आउट सोलर एरे for बस यहाँ पे रिप्लेस Dragon होने, यू कैन to सी दिस। position to the Dragon crewed vehicle to easily move between the two ports so that the Dragon cargo vehicle can arrive on the zenith port. That launch is currently targeted for June 3rd. In between that operation, we are scheduled to launch the Axiom Mission 2 private astronaut mission to the station. They will depart in late May and will also dock to that zenith or space-facing port, leaving with enough margin for the cargo vehicle to come and bring the IROSs to the International Space Station. Yeah, that's right, Gary. And right तो now, जून 3rd को we होगा have the जो Crew लॉन्च 6 crew on ड्रैगन board, का and कार्गो they वाला, are the crew that उसके लिए is अभी जगह करी गई है, relocating the Dragon क्योंकि वो बहुत सारी vehicle चीजें लेके crew. आएगा, वो लाएगा Today will जो mark the रोल आउट सोलर एरे हैं वो भी 64th लेके day आएगा। on station for this crew, who lifted off from Kennedy Space Center on March 2nd at 12:34 a.m. Eastern Time and arrived at station about 24 hours later. And so far, the crew members have dedicated hundreds of hours to scientific research in the orbiting laboratory. And last week, Bowen and Al-Niyadi completed a spacewalk to prepare for upcoming solar array installation that Gary was mentioning. Those arrays will then launch this summer, as he mentioned, on the Cargo Dragon spacecraft. And the mission is the 6th certified crew mission NASA and SpaceX have planned as part of the agency's commercial crew program. Video from the International Space Station as we're in an orbital nighttime. We're now currently over the North Pacific Ocean. You can see the navigation lights coming from Dragon, the starboard green light and the port red light, as well as the internal cabin lights coming from that window on the forward bulkhead section of Dragon Endeavour. तारे तो वो अभी जो डॉट्स हमें दिख रहे थे ना, ग्रीन रेड लाइट के, तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की और ड्रैगन जो कैप्सूल है उसके अंदर की जो नेविगेशन लाइट्स है वो हमें दिख रही थी। Undocked from the zenith or space-facing port at 6:23 a.m. Central Time, made its way along the docking axis, down over to the transition point, and from the transition point at about 60 meters, initiated a transfer maneuver to the midpoint. Dragon has reached the docking axis midpoint. Dragon copies. ओके दिख रहा है तुमको, देखो धीरे धीरे मूवमेंट दिख रहा है, ये आ गया है, does a good job of धीरे showing धीरे आ that गया, देखो ये आ रहा maneuver. है, Again, it you looks can like see this sort of a ये एकदम typical वर्टिकली ऊपर triangle. था,
अभी यहाँ पे आ It's गया, a ये रहा, two-step ये process ऐसे to get घूमता from the घूमता original घूमता घूमता docking आएगा axis to the new एक्सिस पे, axis दिख रहा है? by way of ये a देखो, midpoint. the fellow is coming Made slowly, the it's coming, waypoint a little sooner धीरे than धीरे धीरे anticipated, धीरे, making great time. this one, It's a smooth ये है transition ड्रैगन from जो the आगे आके midpoint. There's लगेगा, no ऊपर था, hold ऊपर at से the घूम के आगे midpoint. आ It रहा just है, धीरे धीरे आ रहा है। makes a maneuver directly to the तो new वो जो ट्रैजेक्टरी axis. दिखा रहे थे The ना, target on the वर्टिकल new जाएंगे, axis is फिर एक about एंगल पे 60 आएंगे, फिर meters नीचे आएंगे, from तो यहाँ the पर वो new docking ट्रांजिशन आ गया। port. Latest calls from here in Mission Control Houston show approximately an 8-minute maneuver. So sometime around 6:50 a.m. Central Time is when we can expect arrival at the new axis. अब तुमको लग रहा होगा ना यार इतना धीरे धीरे Again, in the करने की meantime, क्या जरूरत है ना, flight controllers will उठाओ, continue to थ्रस्टर monitor फायर all the करो, systems, कोल्ड थ्रस्टर्स लगे होंगे, घुमाओ, make changes लगाओ, along the way. खत्म करो ना, है ना? लेकिन वहां Everything पर going इंटरनेशनल very स्पेस smoothly स्टेशन भी for तो this, लटका हुआ है transition भाई। maneuver जब so अपन far. यहाँ से टेक ऑफ करते हैं तो अपने जो लॉन्च पैड होते हैं जहाँ से लिफ्ट ऑफ होता है वो स्टैटिक धरती पे बंधे हुए हैं, तो उस पर अगर एक्स्ट्रा पुश भी लगे तो उनका कुछ ही नहीं होना। यहाँ पर अगर सब कुछ झटकेबाजी में किया कि तुरंत बाहर निकल गए, झटका मार के आगे चले गए, वापस आके भिड़ गए ऐसा नहीं हो सकता है। इट हैज टू बी दिस स्लो ओनली, धीरे धीरे। स्लोली, थिंग्स आर हैपनिंग स्लोली। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक और कारण है, मान लो चलो जल्दीबाजी में कर दें, लेकिन गड़बड़ नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि अगर ये जल्दी से आके आया और पोर्ट करते वक्त, देखो इस पे पोर्ट होगा, यहाँ पे यू कैन गेट अ क्लियर व्यू, देख लो कितनी धीरे मूव कर रहा है, मतलब उसको तो तुम भूल जाओ, तुम यहाँ देखो कितनी धीरे मूव कर रहा है। इस पोर्ट पे था, इस वाले पे था, यहाँ से 60 मीटर ऊपर गया और घूम के इस पोर्ट पे लगने के लिए आ रहा है। इस पे फोकस इसी पे है, ये जो देखो टारगेट नहीं दिखता जैसे बुल्स आए, तो वो वाला टारगेट यहाँ दिख रहा है, इसी यही फोकस है, इसको इस पे ही रहना है। एंड राइट नाउ वी आर some better हम views कहाँ हैं? from हम the चक्कर काट के इधर आ गए International भाई, Space Station and वी आर हियर। Dragon as they start to और देखो यहाँ eliminate. पे एक We've been सैटेलाइट और दिख रहा है, conducting इसका this ट्रांजिट दिख रहा है operation so सैटेलाइट far का, entirely ये in रे the अपन middle यहाँ of पे the हैं। nighttime. तो अभी अपन रात से दिन So में as भी we आ जाएंगे, transition to the new रात axis, से we'll दिन में आ hopefully be जाएंगे getting अपन some अब। better views. And the current plan, as long as we stick on the Here is timeline, India. again, this is a very तो flexible procedure. यहाँ आएगा और We यहाँ can से निकलेगा, command मतलब hold if इंडिया के ऊपर से needed, इसका but कोई पास नहीं है अभी। so far the timeline gets us to dock सूरज अभी during यहाँ पे orbital daytime. हेड ऑन है, एक यहाँ पे भी दिख रहा है ना, डिफरेंट पाथ दिख रहे हैं। ये उससे है, ड्रैगन की स्क्रीन से कैप्चर लिया हुआ है। If you're just now joining us, Crew Dragon has undocked from the station. It first detached its two umbilicals that connect power and data, and then the 12 hooks holding Dragon in place retracted. The thrusters on Dragon, the Draco thrusters, thrusted the vehicle away from station, and now the vehicle is maneuvering. Complete.
I can see the same. दिख रहा है? इट्स हेयर. धीरे 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 धीरे. Here it is. See, thrusters are firing. So ये है हमारा क्रू 6 ड्रैगन जो अभी डॉकिंग के लिए धीरे धीरे जा रहा था. कैसे जा रहा है ना, एक थ्रस्टर फायर किया तो ये तो कोई सारा गेम है ना, वेक्टर्स का है, वेलोसिटी वेक्टर्स का है. थ्रस्टर फायर किया, थोड़ा पुश किया, थोड़ी वेलोसिटी मिली, फिर अगेन उसको एडजस्ट करने के लिए अच्छा भाई थोड़ी ज्यादा नीचे जा रही है वर्टिकली, एक और थ्रस्टर फायर किया दूसरे एंगल पे तो उसको एडजस्ट किया. वेक्टर एडिशन चल रहा है जो क्लास 11 12 में पढ़ते हैं ना अपन. बेसिकली दैट्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, बट हैज टू बी वेरी प्रिसाइज क्योंकि इसके अंदर इंसान है और हम अभी जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर है. धीरे धीरे जा रहे हैं. देखो, did you see that? Thrusters are firing. क्यों? देखो, one more. Back. ये रियल टाइम फायरिंग हो रही है because वेक्टर का गेम है सारा. ये बेस्ट है यार. This is really awesome. You can see there. In such a way that its trajectory is planned to meet with the new axis. So देखो, यहाँ पे आना है. Teams here in Mission Control Houston are polling to consider a smooth transition at the 60-meter point over to waypoint 2. यार वही वाला व्यू चाहिए यार, वही वाला व्यू चाहिए. ऊपर हो गया. अब देखो ऊपर हुआ है ना, पक्का थ्रस्टर फायर होगा इसके सामने लाने के लिए. हाँ ये ठीक है. यस. तो अभी थोड़ा सा ना वो अलाइन नहीं रहा. ये फ्रंट एंड है जो आके डॉक होगा. ये इसकी कैप है, ये ऐसी खुली हुई कैप है. ये देखो, फायर थ्रस्टर फायर. देखो, दिस वन इज गुड. सो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक जगह से अनडॉक होके दूसरी जगह पे डॉक होना चाहते हैं. आई थिंक ये फ्रंट एंड है, यहां पे डॉक होंगे. नो ये है. दिस इज द पॉइंट, नॉट दिस वन. दिस इज द पॉइंट. क्योंकि अभी इसके सामने होगा ना ड्रैगन इसके सामने होगा. अब इसको अप्रोच करेगा. हाँ, है ना. 60-meter point. We can expect to hold at about 60 meters before proceeding into the next waypoint, waypoint 2, which is about 20 meters. मतलब ये चीज अगर धरती पे करनी हो ना तो ये तो मतलब ऐसा यार, ये तो कोई बच्चा ही कर देगा. क्या है ये? तो ऐसा है कि भाई इस पार्किंग लॉट में खड़े थे, यहां से हटा के गाड़ी पीछे लो, रिवर्स लो, दूसरी जगह पार्क करनी है. अब धीरे धीरे यहां से आगे प्रोसीड करेंगे क्योंकि अगर सीधा जाके इस पे टक्कर मार दी so that's all. Dragon station, SpaceX on the Big Loop. Dragon has arrived at the second 60-meter hold point and is configured for docking. Confirm readiness for approach 1. लेकिन जब ये सब देखते हो तो ऐसा करता है ना मन, यार नॉट बनते, क्या मजा आता. हाँ, तूफानी लाइफ. क्या आप छोटी मोटी गाड़ियां चला रहे हैं, यहाँ आप पूरा ड्रैगन कैप्सूल लेके चल रहे हैं. ओके तो अब 60 मीटर दूर है, एग्जैक्टली सामने है, 60 मीटर दूर है और बिल्कुल ये वीडियो गेम ही है. बस इस वीडियो गेम को जिंदा लोग अंदर बैठ के खेल रहे हैं और ये धरती से 400 मीटर ऊपर हो रहा है और मार्वलस टेक्नोलॉजी है. तो अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, गो हेड मिलेगा, आगे जाएंगे, 20 मीटर पास पहुंचेंगे और फिर अगेन दे विल मूव अहेड.
तो ये वीडियो गेम खेल रहे हैं दो बंदे, मतलब भूल जाओ बाकी सारे ऑनलाइन गेमर्स को। राइट नाउ ये है ऑनलाइन गेमिंग, असली ऑनलाइन गेमिंग है मल्टी बिलियन ऑनलाइन गेमिंग। और ये इंस्ट्रक्शंस पढ़े जा रहे हैं गेम के, लेकिन यहां पर लेवल एक ही है एंड नो एक्स्ट्रा लाइफ। वाह यार, ये तो असली थ्रिल है। हा? इनके पास इनकी जॉयस्टिक्स होंगी, इनने हाथ में पकड़ी हुई होंगी। और लाइव इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, these are the rules, follow the rules, you have to go there, take this step, take that step। नहीं नहीं, यहां पे तुम्हारे पॉइंट कट जाएंगे Great news. Dragon has arrived at the docking access and also approach is resuming to waypoint 2. इसका मेन इंटेंशन ये है कि ये जो ड्रैगन कैप्सूल है, ये जहां पे लगा हुआ था वहां पर एक दूसरा ड्रैगन कैप्सूल आके लगेगा, अभी जून में जाएगा वो वहां पे आके लगेगा और उसके अंदर खूब सारी सप्लाई आएगी। अब उसको थोड़ी एक्स्ट्रा जगह चाहिए क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा सामान लेके जा रहा है। इसके लिए जहां पर ये वाला कैप्सूल ड्रैगन लगा हुआ था उसको वहां से हटा के इसको दूसरी जगह फिट कर रहे हैं, और जो नया ड्रैगन कैप्सूल आएगा धरती से जाएगा जो 3 या 4 जून को, वो उस जगह पे फिट होगा जहां पे ये लगा हुआ था। इसलिए इसको शिफ्ट करा जा रहा है। And Dragon has already resumed, or has already made it to the docking access. They did a poll, a go no go poll to You can see waypoint approaching. 2 and देखो got the edges go. पे देखो तो तुमको So पता now चलेगा। they're currently धीरे-धीरे आगे जा रहे हैं अपन। approaching We are waypoint 2. approaching slowly. We are slowly approaching. Dragon is going बहुत to धीरे-धीरे hold प्यार से इसको पकड़ रहे one हैं। final अब पता है time तुमको for यहाँ पे teams प्यार on से the पकड़ने का ground, मतलब the क्या है? astronauts ये aboard खुद Dragon अभी to do a final check किलोमीटर पर before सेकंड की स्पीड में docking भाग to रहा the है station. इंटरनेशनल स्पेस Now, स्टेशन, there aren't any और हम strict इसको पकड़ रहे हैं requirements तो to हम धीरे complete नहीं है, उससे docking थोड़ा सा during तेज a है। day or night रिलेटिव pass, but there is वेलोसिटी, always the इट्स chance that रिलेटिव this hold वेलोसिटी। could continue until lighting conditions on the docking port are ideal. Now, once Dragon is There it is. ready, it will begin the final approach. SpaceX Dragon, visors are down. Copy, visors are down. ऑर्बिटल स्पीड कैसी होती है? 4 किलोमीटर पर सेकंड, 7 किलोमीटर पर सेकंड, ये होती है ऑर्बिटल स्पीड। And again, that तो extra जस्ट यू कैन layer of इमेजिन protection कि राइट through नाउ ये जो the मैन्यूवर delicate हो रहे हैं, हम जो maneuver धीरे of धीरे आगे जा docking रहे to the हैं, International हम Space एक ऑब्जेक्ट Station. के पास जा रहे हैं जो Visors are ऑलरेडी down through this maneuver 6-7 to किलोमीटर पर waypoint 2. सेकंड की They're स्पीड से making चल रहा great है। progress तो from हमारी स्पीड 60 कितनी है? meters to 20 meters. They're इट्स currently ऑल at रिलेटिव 30 एंड वी आर meters. अप्रोचिंग। देखो अगर एजेस पे देखोगे ना, देन यू विल गेट एन आइडिया। देखो Station Houston, नाउ वी आर कमिंग क्लोज, तो फील्ड व्यू के step हिसाब से हमारा वो 3, हटता please जा let रहा us know है, when हमें यहाँ पे आके your डॉकिंग करनी review है। is complete. Here we are, beautiful sight, beautiful sight. Look here. So ये कैप है जो आके आके बंद हो जाती है जब ये वापस जाते हैं री एंट्री के टाइम पे, बट अभी ये इस पे डॉकिंग होगी। Here we are, beautiful. Copy. सी ये भी कितना क्लियर हो गया, एंड यस बुलसाई एग्जैक्टली सेट होना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि हाथ से पकड़ के एडजस्ट कर देगा, हाँ भैया थोड़ा नीचे ले थोड़ा साइड ले Station Houston at ऐसा नहीं है। waypoint 2. Dragon will briefly pause to align for docking, then automatically resume approach. Station copies. Approaching. Dragon, SpaceX on the big loop. Ground has pulled go for approach 2 and will be commanding approach Look about here, Red. shortly. As a Slowly, reminder, slowly. once Dragon We are is in just the coming crew to hands rest. off point, retreat And and see, breakout are अर्थ not को देखो, permitted. तुमको पता चलेगा। आ रहा है, देखो थ्रस्टर्स फायर हो रहे हैं इधर उधर। SpaceX Dragon copies, and we आ रहा है। approach. ब्यूटी यार, इसके साथ तो कैसे खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लूंगा। Or you can hear the Yeah! Station Houston, Dragon Wow. is on final approach So and is go this for docking. is- Station crew, Dragon approaching for docking. and थ्रस्टर्स फायर्ड। Station copies. ये रेड लाइट की बात कर रहे थे वो जो दिख रहे थे ना, those are good words. Step ये अर्थ 5. का है। All right, lots of action in that last minute or so. The team's Dragon has a relatively new capability to pause Go for docking. at waypoint 2 Go for versus docking. a commanded hold. The transition मजा आ रहा है, from मजा आ रहा है ना? waypoint 2 is instead of a commanded hold,
It is an approach prep, which is about a 1-minute pause, and you can see the resume has already begun from waypoint 2. So we are closing in inside 20 meters, actually 17 meters and closing. It's coming close. ये धीरे-धीरे आगे आ रहा है. अगर तुम realize नहीं कर रहे हो तो वो धीरे-धीरे आगे आ रहा था. meters a second. ये देखो पास में आ रहा है. और तुम अगर अर्थ को देखोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि हाउ फास्ट दिस होल थिंग इज मूविंग. इसको भूल जाओ 15 meters. और यहां देखो तो यू विल रियलाइज कि कितनी तेज चल रहा है ये सब कुछ. नीचे अर्थ है 6400 किलोमीटर जिसका रेडियस है, जिससे हम 400 किलोमीटर ऊपर हैं. एंड देखो किस स्पीड से मूव करती हुई दिख रही है. और ये डॉकिंग होने वाली है. वी आर वेरी क्लोज. अब तो पढ़ भी सकते हैं अमन. यहां पे लिखा हुआ है ESA, ईसा लिखा हुआ है. ये रहा, ये आ रहा है. एंड बादल दिख रहे हैं. ओके, कैमरास को एडजस्ट किया जा रहा है जिससे कि कैप्चर कर सकें. वी आर हियर राइट नाउ. ब्यूटीफुल. ओहो, अभी इसको एडजस्ट होना पड़ेगा क्योंकि यहां से अगर सीधी लाइन खींचते हैं तो हाँ हो गया आ रहा सीधा आ रहा है. आओ भैया, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे. इजी. हाँ ना इसको. आई थिंक एट दिस पॉइंट इट हैज टू कम. छोटे मोटे थ्रस्टर्स फायर हो रहे. देखो पास में आ गया ना, बड़ा दिखने लग गया ना. देखो कितना ये पास में क्लोज आने के कारण बड़ा दिख रहा है ना. राइट, अभी दूर था और पास आ रहा है. वाओ. Then the vehicle will stand by for initial contact and capture, and then will be followed by a series of events to hard dock Dragon to the new port. देखो यहाँ पे देखो तो पता चलेगा डिफरेंस क्या आ रहा है मूवमेंट का. We'll report the docking time at the time of physical close. ऐसा लग रहा है ना कि स्क्रीन के बाहर ना निकल के आ जाए. Inside 5 meters. Copy, 5 meters. Such a cool view here as Dragon approaches the new docking port. अब देखो how much precision is required. इसको सीधा आके यहाँ पे सेट होना है. अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे है तो thrusters have to be fired. ये देखो 3 meters and close. ये सेट नहीं है, ये यहाँ होना चाहिए. Thrusters have to be fired. परफेक्ट नहीं जा रहा अभी ये. यहाँ पे thrusters फायर होंगे क्योंकि इसको इसके साथ अलाइन करना है. 2 meters, chop, or crew hands off point. 1 meter. Copy, 1 meter. And ब्यूटीफुल यार. देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है ना तुमको, लेकिन अब इसको सही किया जाएगा. अटक गया है. अब ये सही होगा. भिड़ गया वापस आ रहा है क्या? नहीं होल्ड करो यार. हो गया. नीचे. ये देखो झटका लगा ना तो ये हिला थोड़ा. That docking time is 7:01 a.m. Central Time. Dragon and station at the time of docking were 262 statute miles off the east coast of the United States, just off the coast of South Carolina. Ring retraction in progress. The soft capture ring on Dragon, you can see, is retracting, pulling Dragon in physically to meet up with the international docking adapter. This maneuver sets Dragon up to
position itself in such a way to start the hard capture sequence, really the reverse of what we just saw for undocking from the Zenith port. We'll attach Dragon Endeavour by way of 12 hooks that secure Dragon to the station, followed by extending an umbilical connection and allowing the transfer of power and data from the International Space Station to Dragon. तो यहाँ पर एक सॉफ्ट रिंग होती है, As well as वो reverse. रिंग अब इसको फिजिकली अपने अंदर पुल कर रही है. वो इसलिए होगी ना, वो जो सॉफ्ट जो रिंग होगी जिससे कि जो इंपैक्ट है वो उसको खा सके. देखो मूवमेंट हुआ है, ये मूव हुआ है. As Gary mentioned, we will see the reverse of what we saw during undocking. First, 6 hooks will begin to deploy, and then the second set of 6 hooks will deploy, followed by the umbilicals. And this process will take about 15 minutes or so. And after all docking events are successful, in-flight controllers will configure Dragon 4 जो इसको dock पासन करेंगे, operations, अम्बिलिकल connecting कोड power and आएगी data जो to the कनेक्ट कर देगी spacecraft. इसको पावर और The कम्युनिकेशन के crew लिए will be able to get out इंटरनेशनल of स्पेस their स्टेशन से. suits and set them up to dry and begin operations to get the hatches back open. Now, this includes pressurizing the vestibule and a new round of leak checks. And depending on the exact timing, they have the option to have a meal if needed, or they Everything can wait goes so until they're slow. back on board station. And we do expect it to take about 2 hours before the hatches are back open. अभी एस्ट्रोनॉट्स उसके अंदर ही हैं. अभी काफी लंबा प्रोसेस होना है. पहले प्रॉपर डॉकिंग होगी, फिर इसका चेक होगा कि प्रॉपर डॉकिंग हुई है ना, फिर प्रेशराइज चैम्बर्स हैं, तो अब उनको ट्रांसफर करना है फ्रॉम दिस ड्रैगन कैप्सूल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो उन चैम्बर्स को चेक किया जाएगा कि इनके अंदर प्रॉपर प्रेशर जो है वो बिल्डअप हुआ कि नहीं हुआ. नहीं तो वो लैचेस अगर खोल दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर उससे बाहर निकल आए तो वो बिना प्रेशराइज करे बिना. सो एवरीथिंग विल हैपन नाउ. Ring अभी इसके अंदर ही complete. एस्ट्रोनॉट्स, Docking they are sequence still is inside. holding for MCS reconfiguration. Roger, copy. और ये प्रोसेस टाइम लेता है, 10-15 मिनट लगेगी अभी तो खाली लैचेस को लगने में. अब कोई अगर इस वक्त इस स्ट्रीम को देखेगा तो उसको क्या लगेगा, क्या देख रहे हैं सब, क्या सब देख रहे हैं. लेकिन अभी एस्ट्रोनॉट्स अंदर हैं, अभी तो अब इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूव इन करना है. तो पूरा सिस्टम चेक होगा, लैचेस लगेंगे, कनेक्शन होगा, देन इनको यहाँ से निकल के उधर जाने के लिए इनको यहाँ से निकल के उधर जाना भी तो होगा. वो पूरा प्रोसेस होगा अभी तो. Station Houston on the Big Loop, MCS configured, proceeding with hook driving. Because everything is static. Station copy. Part of the delicate procedure here is a dance between the अब देखो एक और चीज तुम समझो, Dragon and the यहाँ पर initiation of the hooks. ये जो सब कुछ बाहर का दिख रहा है ना, एक्सटर्नल जो है पाइप्स दिख रही थी तुमको, उसमें वायर्स होंगे, कनेक्टर्स होंगे, उनके ऊपर परमानेंटली सूरज की गर्मी आ रही है.
यानी जितना भी Control गुस्सा its है attitude सूरज में on वो the सब उनके control ऊपर moment हर gyros वक्त बरस only, रहा है जब no भी वो सूरज thrusters. को देख रहे हैं. तो दे हैव टू बी डिजाइन इन सच अ वे कि वो खराब नहीं हो सकते सूरज के रेडिएशन से. उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देने की बहुत जरूरत है. क्यों? पहली बात बाहर तो वैक्यूम With the है, International Space तो Station वैक्यूम attitude है control configured, तो the first set of इनके hooks अंदर are अगर कोई dragging. गैस ट्रैप रह गई तो फट के बाहर निकलेगी. उसको आउट Again, गैसिंग for कहते हैं. those मैंने following लास्ट along with today's वीडियो में भी डिस्कस operations, किया था ये बात, लास्ट undocking स्ट्रीम जब and ओपन physical करी थी. separation from the station's zenith port was at 6:23 a.m. Central Time, and they redocked 38 minutes later, 7:01 a.m. Central Time, to the forward port. यू कैन सी ऑन हेयर, यहाँ पे देखो ड्रैगन कैप्सूल वहां पे लगा हुआ है. इस पूरे प्रोसेस ने 38 मिनट्स ली. इन्हें बताया कि अभी टोटल ये प्रोसेस 38 मिनट्स में हुआ है. Though you can't see much from this view, lots happening with some of the hardware on board So Dragon. we are just waiting. Those first set of hooks are complete. हम वेट कर The रहे second हैं is driving. Again, there are लैचिंग 12 प्रोसेस hooks के that'll पूरे secure होने का, Dragon to station, and hard कनेक्टर्स का capture पूरा इसके साथ complete सेट हो जाने will का, occur once the umbilical क्योंकि is उसके mated बाद नेक्स्ट स्टेप होगा. between ये ऑटोमेटिक Dragon प्रोसेस है, and अपने the आप हो रहा है. International Space Station. सिक्योर किए जा रहे हैं बिकॉज वी हैव टू गेट द एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम दिस साइड. And the view you are inside seeing is of Crew our Dragon International Space having Station. moved from IDA 3 or the International Docking Adapter 3 on the zenith or space facing Harmony port to IDA 2 on the forward Harmony port. And it is currently in progress of completing the hard capture. अब तुम इस बारे में सोचो ना दोस्तों कि जब इसकी डिजाइन प्लानिंग हुई होगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो कितना डिटेल में प्लान किया गया होगा, कितना सोच समझ के प्लानिंग की गई होगी. जस्ट थिंक अबाउट दैट. क्यों? क्योंकि अब ये ऐसा तो नहीं कि धरती पे कि भाई मैकेनिक को बुला के आपने कुछ इसमें अपग्रेडेशन करा दिया, आपने कुछ हटवा दिया, कुछ बदलवा दिया. ये स्पेस में, और इसको करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को जाना पड़ेगा, तो दे हैव टू गो इन अ लॉन्च व्हीकल. और फिर जब आप किसी इंसान को स्पेस में भेज रहे हो तो पूरा सेटअप चाहिए आपको. तो वहां पर ऑलरेडी इतनी सब कुछ प्लानिंग यहाँ पे हो रखी थी कि हमको कितने डॉकिंग पोर्ट, किस तरह कैसे डॉकिंग पोर्ट चाहिए. और ये अपग्रेड भी होता जा रहा है. जैसे अभी नए रोल आउट सोलर एरेज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली इसको थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है. बट जस्ट थिंक अबाउट दैट डिटेल्ड इलेबोरेट प्लानिंग जो हुई होगी. ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये जरूरत पड़ सकती है, इस चीज को हमको 3-4 जगह प्रोवाइड करवाना चाहिए. ऐसा नहीं होता है कि नहीं नहीं ये एक मत रखो, ऐसे 3-4 ऑप्शंस रखो. डिटेल्ड प्लानिंग हुई होगी. ब्यूटीफुल यार.
अब इंडिया भी प्लान कर रहा है, एंड इंडिया के पास क्या ना अभी, मतलब एक तो आप सबसे पहले करो तो थोड़ा सा आपके पास एक अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन अब इंडिया जब कर रहा है तो ऑलरेडी वी हैव सीन स्पेस लैब्स या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो इंडिया के लिए थोड़ा बस आसान ये रहेगा कि दे हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि करना क्या है, बट स्टिल एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। आप प्लानिंग कितनी भी कर लो पन्ने पे, एग्जीक्यूट करना ही सबसे बड़ी बात होती है। क्यों? अब देखो सीधी बात है, चांद पे तो बहुत बार जाके आए ना, बट एग्जीक्यूशन मैटर्स। अभी जापान में भी एक अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हमारा चंद्रयान 3 हम फिर से अटेम्प्ट लेने वाले हैं, एंड स्टिल एक बार हार्ट बीट तेज हो जाती है सोच के यार वापस जाना है चांद पे। आर्टेमिस का फिर से प्लान हो रहा है, बट वो तो बहुत बार जाके आए ना, उनके लिए तो रोज का काम हो गया था, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, चांद पे जा रहे हैं। बट एग्जीक्यूशन का टाइम जब आता है तो एवरी टाइम इट्स 100% एड्रेनालिन रश, 100%। provides power and data. ये कहीं भी हो सकता है, Crew Dragon, मतलब चाहे वो इतना हाई प्रोफाइल स्टफ हो जहां पे टेक्नोलॉजी भी चाहिए, जहां पे जिद चाहिए, जहां पे दिमाग का प्रेजेंस चाहिए, और वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हो सकता है दोस्तों, जहां पर हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, हमारा जो हमने गोल या एम सेट किया है, हम उसके लिए कितने डेडिकेटेड है। एग्जीक्यूशन ही मैटर करता है, तुम चाहे कितनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर लो, एग्जीक्यूशन मैटर्स। बट हाँ, विदाउट प्लानिंग अगर आप कुछ कर रहे हो तो यू आर प्लानिंग टू फेल। ये बहुत बड़ी कहावत है ना कि if you are not planning and you are just jumping into action, then you are jumping into a failure. So we have to plan, but we have to then execute it also. तो ये लाइफ में याद रखना अपने को, इसका पूरा प्लान हुआ होगा, लेकिन खाली प्लान से काम नहीं चलेगा, एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट होना चाहिए, उसको परफेक्टली करना पड़ेगा। And this is right now beauty. फिर से बता रहा हूँ, कोई इसको देखे तो क्या लगेगा कि यार ये स्क्रीन के ऊपर ये एक वॉलपेपर लगा के क्या करा जा रहा है लाइव स्ट्रीम में। तो मैं बता दूं दोस्तों, अभी इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स हैं। ये जो ड्रैगन कैप्सूल है यहाँ पे डॉक हुआ है, इसको हार्ड डॉकिंग कहते हैं। प्रोसेस अभी चल रहा है जहाँ पे इसमें 12 स्क्रूज लैचेस लगेंगे, तो इसको पकड़ लेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट होगी, फिर इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं 2 एस्ट्रोनॉट्स, उनको हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वापस लेके जाएंगे। ये भी होगा। All right, you heard those congratulatory words all around from Steve Bowen, commander inside the Crew Dragon Endeavour, from inside the International Space Station, Frank Rubio, and here in Mission Control Houston, Capcom, Alex Kanalakos. Now that Crew 6 is hard docked and ready and docked to the International Space Station, NASA astronaut Steve Bowen, Woody Hoberg, Emirati astronaut Sultan Al-Niadi, and Roscosmos cosmonaut Andrei Fedyaev have officially redocked to the International Space Station. Okay. So we're going to wrap up our live coverage of Dragon's third relocation maneuver. The crew now has time to get out of their suits and begin the process of opening up the hatches. That'll take approximately 2 hours. As mentioned earlier, the relocation has freed up Harmony's zenith or space-facing port for the docking of SpaceX's 28th commercial resupply mission to the International Space Station, and of course we expect Axiom Mission 2 to dock later this month. The Zenith parking spot for SpaceX's 28th commercial resupply mission allows for the Canadarm2 to more easily access the iROSAs, or the new solar arrays, that will arrive in Dragon's unpressurized trunk. And meanwhile, Crew 6 will remain on station until this fall, targeting late August for a return to Earth inside Crew Dragon Endeavour off the coast of Florida. But before they go, NASA's SpaceX Crew 7 mission will launch and arrive to keep the station's complement at 7 people. So we'll have another full house of 11 with 2 Dragon crews and 1 Soyuz docked to the space station at the same time. Well, thanks again one more time for tuning in to today's coverage of the port relocation maneuver. I hope you'll join us for next week's Roscosmos spacewalk, the launch of the Axiom Mission 2 private astronaut mission, the launch of CRS-28 this summer, and again in the fall, as Jesse mentioned, for all of our Crew 6 and Crew 7 activities, along with all of our great coverage along the way. Until then,
This is Mission Control Houston. Okay. This is a remarkable place to me because you have on one side over. Okay, so भाई ऐसा है कि वहां से जो आ रहा था लाइव कवरेज वो हो गया खत्म। अभी जो क्रू है वो ओके, अब मैं इसको बंद कर देता हूं, है ना। हाँ, सो ओके, अब अपन बात करते हैं। तो देखो भाई, अपन ने आज ये देखा कि अगर मुझे किसी ड्रैगन कैप्सूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है तो वो इतना सिंपल नहीं है कि हम सीधा उसको उठाएं और दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। ये टोटल थोड़ा सा मूवमेंट था, लेकिन टोटल इसने 38 मिनट्स लिए। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, जैसे कि उसको पहले ऊपर उठाया जाता है धीरे धीरे, उससे पहले उसके लैचेस खोले जाते हैं, उसके 6 जो स्क्रूज उसको बांध के रखते हैं वो खोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को हटाते हैं, फिर फिजिकली उसको बाहर निकाला जाता है, थ्रस्टर्स फायर करे जाते हैं जिससे कि उसको दूर ले जाएं। 90 मीटर की हाइट पे लेके गया, वापस 60 मीटर की हाइट पे लेके आए, फिर एक ट्रेजेक्ट्री डिफाइन करी गई, उस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर उसको मूव करा गया, कंटिन्यूसली थ्रस्टर्स फायर होते रहे, कंटिन्यूस थ्रस्टर फायरिंग से उसको वापस उस ट्रेजेक्ट्री पे लाके सामने की साइड कनेक्ट किया गया। अभी भी इस वक्त भी जब हम ये बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अभी भी उस कैप्सूल के अंदर हैं। पूरा प्रोसेस होगा, प्रेशराइजेशन होगा चैम्बर्स का, और फिर वो कैप्सूल से इंटरनेशनल स्टेशन में मूव कर जाएंगे। अब दूसरी बात यह दोस्तों, आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जून में, मतलब तुम बोलोगे तो मई चालू है और आप जून की बात करो, नहीं, बात है कि जून में, अगस्त में, सितंबर में, तो जून में एक कार्गो जाने वाला है, अपन उसको भी कवर करेंगे। और दूसरी बात ये, 8 तारीख को सुबह 6 बजे एक लॉन्च है नासा का, क्यूब सेट्स लॉन्च होंगी, छोटी छोटी सैटेलाइट्स होती हैं क्यूब सेट, वो लॉन्च होंगी। दैट थ्रू द इलेक्ट्रॉन, जो रॉकेट है उसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन लॉन्च व्हीकल जो है उनके, उसके थ्रू रॉकेट लैब का जो है उसके थ्रू लॉन्च होगी। तो उसके लिए भी एक इंटरेस्टिंग सा, मतलब वही तो उसमें सेशन में तुमको बताऊंगा कि जो वो रॉकेट है वो बाकियों से कैसे डिफरेंट है, वो जो लॉन्च व्हीकल है वो बाकी लॉन्च व्हीकल से कैसे डिफरेंट है, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो अपकमिंग अपने पास काफी इंटरेस्टिंग लॉन्चेस हैं, अपने पास काफी इंटरेस्टिंग लाइव सेशंस आने वाले हैं। तो मैक्सिमम शेयर करो, जितने भी तुम्हारे ग्रुप्स हैं, जितने भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल हैं, वहां पर शेयर करो, क्योंकि ये एक अटेम्प्ट है जहां पर हम स्पेस के बारे में सीख रहे हैं थ्रू द लाइव स्ट्रीम्स, बट यहां पर बातें हम हिंदी में करते हैं जिससे कि हमारे लिए समझना आसान हो जाए, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू द थिंग्स, और तुमको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए काफी है। आज हमने काफी इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट देखा। अगर हम एक एस्ट्रोनॉट होते हैं तो हमारी लाइफ में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ये सारे एस्ट्रोनॉट्स जो है वो शायद जून या जुलाई में वापस आ जाएंगे, प्रोबेबली शायद जुलाई में वापस आएंगे, नहीं ये शायद अगस्त में वापस आएंगे, और उससे पहले दूसरे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो फ्लाई करके वहां चले जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सुनसान नहीं छोड़ सकते। तो दूसरे जाएंगे और ये वापस आएंगे, और ये इसी कैप्सूल में वापस आएंगे जिस कैप्सूल को इन्हें शिफ्ट किया है, तो इसी से इनको वापस भी आना है, तो उसका ध्यान भी तो रखना पड़ेगा इनको। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और तुमने अब अगर अभी तक अपने सर्कल में इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो इस चैनल का लिंक अपने सर्कल में शेयर कर दो। मैक्सिमम रीच हमें बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों, ताकि हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। जय हिंद।